So this is Leetcode's first problem to sum, and here हमें क्या करना है? We have to take an array. We are given an array nums, and we are given a target value which is unknown. We have to see कि adding दो indices को add करके are we getting the value of the target number? So we can use two approaches for this. First will be a brute force method. I'll outline the process of it. So first we pick the first number, go through every number after it, add them together. 2 and 7 लिया, add किया, 9 आया, आ गया, and then we return the indices 0 and 1. But imagine if it was 17, we take 2, we add everything, नहीं आया, आ गया. That's how it's gonna work. So we stop when we find the pair and then return the index value. So let's get to it, even though it's quite inefficient. We need to know the brute force method. So पहले nums जो array है उसका size लेना है int n में. Int n equals num size. Then we start the first loop. It's gonna be a nested loop because पहले दो को देख कर करेंगे. दो unwhere loop starts. 7 को देगा, 11 को देगा, 15 को देगा. Then we're gonna add it. ठीक है? For int I equals to 0, I n से छोटा है, I को 1 से बड़ा. Now the j का लूप लेंगे. int j equals to I plus 1, j भी n से छोटा है, it can't exceed n, j को 1 से बड़ा. Now the adding part, nums I plus nums j, add okay, target value पे आ रहे हैं नहीं. Now if this goes in, it will go into this bracket, and then we have to return the index values. Return I comma j. Now let's check for any typos or errors. Okay, looks good. Great. So it works for all the given test cases. 3 3 6 target value थी 0 1 0 1. Test case 3 2 4 3 से किया 2 से किया नहीं आया 3 2 4, so it should be 0 and 2. Oh sorry, 1 and 2, 2 and 4. So this is the brute force approach. Now for the reasons I mentioned before, if we take 2 and then now let's imagine a way कि सोचो nums में instead, now since nums is not known to us, now nums में बंदा कोई 10,000 indices भी डाल सकता है. If you take 2 and if you take 10,000 तक हमने जा रही है नंबर लंबी list, we're gonna have to check 2 7 11 15 until 10,000 तक लेके जाओगे. इतनी हिंदी में आती भी नहीं होगी बोलनी. तो we can't take this approach because 2 subs add करेगा, 7 subs add करेगा एक बार, 11 subs add करेगा. So it's like a nested loops are frowned down upon because they're incredibly inefficient. So we're going to use something which is quite cool. It's known as an unordered map. Now उसमें क्या करेंगे? We go through the array one time and one time only. Now computer क्या करेगा? वो याद कर लेगा कि हाँ भाई मैंने देखा हुआ है, तो कोई भी नंबर मैं अब लूँगा, आई विल रिमेंबर कि इसका मुझे ये पजल में पीस फिट करना होगा कि डायरेक्टली टारगेट वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज ये वैल्यू मैंने पहले देखी हुई थी. सो अब अंग्रेजी में बोलता हूँ. We go through the array once. Every number we need to find will eventually appear after its pair. By storing all previous numbers, we guarantee we can always find the first number on the map. Now this time complexity is on, since it's a one pass, एक बार में तुम देख के याद रख लेते हो. And space complexity is also on because you're only having to store it one time. Let's clean this. Okay, what typos and all and people now. Okay, so since we are more focused about efficiency, we're going to just take direct values num size so that it doesn't even have to store n अलग से.
अब ये क्या कर रहा है, इंट कॉम्प्लीमेंट क्या लिया हमने, इंट कॉम्प्लीमेंट इज दैट वैल्यू की, नो मैथ्स का कॉम्प्लीमेंट तो पढ़ा ही है सबने। सो टारगेट वैल्यू है, टारगेट वैल्यू को हमने एक लेट्स से वी टुक अ लूप 2 लिया, नो लिया। सो दिस इज वेयर द मैजिक हैपेंस, जो याद रखी वाली चीज़ बोली ना मैंने। नाउ अब नो है विच इज़ राइट वाली, कंप्यूटर नोज दैट। नम्स है, फर्स्ट लूप हमने पहली जगह ली 2। इट व्हाट इट विल डू इज इट विल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, कि 9 से हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आया। नाउ 7 तो पता है हमें, सो इट विल लुक फॉर 7 स्पेसिफिकली, बिकॉज एक बार उसने पूरी अरे में देखा था तो उसको 7 याद होगा कि हाँ यहाँ थी, इसकी की मुझे पता है ना। इट्स कॉल्ड अ की वैल्यू मैप, की वैल्यू पेयर। बाद में कभी कोई और लीड कोड में एक्सप्लेन करूँगा। ओके int nums, okay we took the complement. Now if now we're going to start the magic of scene क्या होता है भाई, if हमने देखा हुआ है पहले काउंट में कहीं कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू को, so checking the complement exists and return scene complement की exact value comma its index. All right, we have to write these for C++ में सब लिखना पड़ता है। return Om Namah Shivaya. Alright, you have to, sorry मैंने initialize नहीं किया। Now okay, in target, so it has seen this, so I didn't even put in the value is scene क्या होता है या फिर unordered map क्या होता है। Now I'm gonna focus more on explaining the conceptual part of it. Now I would suggest कि अगर तुम्हें कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, लाइक unordered map इसमें ये पता कैसे चला कि लेस देन इंट रखना है, इंट ये सीन क्या रखना है, या फिर इवन अगर नेस्टेड लूप भी समझ नहीं आया, डोंट स्वेट अबाउट इट दैट मच। व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन इज कि तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट पहले समझ आ रहा है, एंड एज यू बिल्ड टुवर्ड्स थिंग्स यू कैन ईजिली पिक अप इंटुइशन कि भाई हाँ मैंने ये प्रॉब्लम 20,000 साल पहले की थी, दिस इज हाउ इट्स गोना वर्क। इस सब्जी में ये अचार डाला था, इस सब्जी में ये मसाला डाला था, थोड़ा मसल मेमोरी बन जाती है।